What is agriculture? Agriculture is reproductive industry. What is agriculture as reproductive industry? Where we are utilizing natural factors, tree को लेकर चलते हैं, soil, relief and climate, and we are thereby reproducing something out of it. What is the component that we are reproducing? The components that we reproduce includes crops, livestock, aquaculture. Mind it, aquaculture is again a whole soul term. You cannot call it fisheries, क्योंकि fisheries में आप सिर्फ nectons को लेकर आएंगे. Nectons is the term that is applied to the swimmers. जो aquatic lifestyle होता है वो तीन ही है. Nectons, the swimmers, माने सारे variety of fishes. Planktons, the drifters, जिसमें zooplanktons and phytoplanktons आते हैं. And benthos, the life form which is somewhere attached to the bottom of the ocean floor. These are the three. So when I talk about fishes, it is an incomplete term. Better term in agriculture is aquaculture, because aquaculture incorporate fishing, that is you are harvesting fishes, plus you are also harvesting gold nominal planktons and weeds. अगर आपने सिर्फ fisheries लिखा तो planktons और weed तो untouched रह गए ना. तो agriculture is what? Agriculture is crop, agriculture is livestock, agriculture is wood production, pasture production, and it is also aquaculture. Agriculture को अगर आप इन्हीं दोनों point पे justify करो, how many constituents that we have with agriculture? Soil varies from one location to other, climate varies from one location to other, relief varies from one location to other. Can I cultivate with the same magnitude in Ladakh Union Territory of our country as we can cultivate in Punjab? Neither the relief is favorable there, nor climate and soil. I have got better conditions available in Punjab. So natural conditions determine agriculture, and how many of the range of natural conditions are there on the map of world, all of us can understand. Second thing that you have to understand is agriculture is so many things. तो so many things को कैसे organize करें, ऐसे करते हैं. And then we'll formally start with it. ठीक है? So what are the constituents of agriculture? Constituents of agriculture is crop. ठीक है? How many categories we classify crops into? एक हो गया food crop. क्रॉप नहीं लिखते हैं, क्रॉप हेडिंग में लिखा है, फूड ही लिखकर चलते हैं. वन इज फूड क्रॉप, टू इज कैश क्रॉप. हाउ मेनी कैटेगरीज आई डिवाइड फूड क्रॉप इनटू? प्रिंसिपल ग्रेन एंड न्यूट्री सीरियल. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल ग्रेन्स आर देयर? राइस एंड व्हीट. How many types of nutri cereal are there? Minimum number भी count करें तो 5 हैं. Which are the nutri cereal that we take into consideration? इंडिया में काउंट करेंगे तो पहला काउंट करना चाहिए ज्वार, बट वर्ल्ड में काउंट करेंगे तो फर्स्ट काउंट होगा मेज. सो मेज, ज्वार, बाजरा, रागी, बार्ले, and I can continue. I can count oat, many of them, nutri cereal. So I have got at least 5 plus 2, 7 as crops in the food crop category. Then I come to cash crop. When I come to cash crop, I can further classify it into traditional plantation. We got the opportunity to talk about it in our migration. Tea, coffee, rubber, cocoa, spices. यहाँ पर भी रुक जाओ. Spices के कितने range होंगे? Yes or no? कॉफी के भी तो बहुत सारे कमर्शियल ग्रेड है, उनको छोड़ दो. रबर, कॉफी, कोकोआ, टी को 1 काउंट करो ईच, बट स्पाइसेस मीन्स मेनी. सो स्पाइसेस के भी रेंज है. देन यू ऐड नॉन ट्रेडिशनल प्लांटेशन. हाउ मेनी नॉन ट्रेडिशनल प्लांटेशन क्रॉप्स आर आइडेंटिफाइड? एट लीस्ट 2 इफ नॉट बियॉन्ड. कॉटन एंड केन. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट क्लास? हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, बहुत जरूरी है टू इंट्रोड्यूस अस टू विटेल्सीज क्लासिफिकेशन. दैट इज व्हाट वी हैव टू फॉर्मली स्टार्ट विद.
अच्छा, कैश क्रॉप में आपने ट्रेडिशनल प्लांटेशन, कॉफी, कोकोआ, रबर, स्पाइसेस, नॉन ट्रेडिशनल प्लांटेशन, कॉटन, केन। कैश क्रॉप की लिस्ट खत्म ही नहीं होगी टिल द टाइम यू ऐड हॉर्टिकल्चर। अच्छा, हॉर्टिकल्चर को भी अगर आप बेसिक मिनिमल में रखो तो भी फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल, 3 कैटेगरी आएंगे और तीनों ही कैटेगरी के 3 सब कैटेगरीज आएंगे। क्या? ट्रॉपिकल फ्रूट, टेम्परेट फ्रूट, एरिड फ्रूट। क्लियर? ट्रॉपिकल मैंगो, टेम्परेट एप्पल, एरिड आंवला। What you are basically trying to justify, I don't have a limit when it comes on to agriculture. अच्छा, अभी माइंड इट, अभी हम सिर्फ क्रॉप की बात कर रहे हैं। क्रॉप के साथ ही कंपैटिबिलिटी में ले आते हैं दूसरा, सो आई लेबल इट एज नंबर 2. When I come to number 2 along with crop, it is silvi and pasture culture. So it is also basically cultivation of crop, but it is tree based. अच्छा, अब ट्री बेस्ड भी खत्म नहीं होता एक पॉइंट पर। वुड ट्री बेस्ड फार्मिंग, तो क्या ट्री बेस्ड फार्मिंग में ऑयल पाम आ सकता है, मैंगो ट्री आ सकता है? कम ऑन, यस और नो? सोशल फॉरेस्ट्री में आर वी कल्टिवेटिंग जात रोपा, बायोडीजल, महुआ, स्वीट शोरगम, बुशेस, काउंट करते चलो, मेनी वैरायटी. एंड देन वी हैव गॉट कंस्टिट्यूएंट एज livestock, and we also have aquaculture. यहां पर भी लिस्ट को खत्म नहीं कर सकते. लाइवस्टॉक को बेसिक मिनिमल में भी रखोगे तो ड्रॉट एनिमल्स एंड मिल्च कैटल. आर यू अंडरस्टैंडिंग इट क्लास? और एक्वाकल्चर आपको कई बार बता दिया, एक्वाकल्चर में आप नेक्टॉन्स को तो ले ही रहे हो. नेक्टॉन्स क्या है? स्विमर्स. मतलब सारी वैरायटीज ऑफ फिशेस को आप नेक्टॉन्स में सेफली काउंट कर लो. और उसके अलावा आप किसको काउंट कर सकते हैं? वीड, सी नहीं लिखते हैं बिकॉज आई कैन इंक्लूड इट विद द फ्रेश वाटर ऑल्सो, सो आई जस्ट राइट वीड. सो इट इज वीड्स दैट कैन बी इंक्लूडेड, it is planktons that can be included. So I think I have made the point clear. Agriculture in its minimum possible constituent also is big range, very big range. Are you convinced? तो पहले तो इसको कॉपी डाउन कर लो और मुझे गो अहेड दे दो. अभी हमने कुछ फॉर्मली शुरू करा नहीं, एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सॉर्ट क्रिएट कर रहे हैं. क्वेश्चन तो कहीं पर भी नहीं लिखा, कौन सा क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? नेक्टॉन, वीड एंड प्लैंकटन. गो अहेड दीजिए. वर्चुअल क्लास स्टूडेंट्स हैंड रेज करके लिख लिया है तो वेट कर रहे हैं आपके लिए. Okay, so first thing about agriculture, reproductive industry that involves cultivation of crops, rearing of animals, aquaculture and silvipasture culture. Nutshell, it includes big spectrum of constituent. Convince हो गए? अच्छा, ये भी कंप्लीट नहीं है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं. तो एग्रीकल्चर इज नॉट जस्ट अबाउट कंस्टिट्यूएंट, एग्रीकल्चर इज अबाउट रेंज ऑफ फैसिलिटेटर्स. तो सेकेंड पॉइंट ऑफ इंट्रोडक्शन लेते हैं एज फैसिलिटेटर्स. व्हाट आर द फैसिलिटेटर्स ऑफ एग्रीकल्चर? Facilitators of agriculture can be safely classified into 2 categories. कौन कौन से? Natural and human. हम बिल्कुल बेसिक मिनिमल पर रख रहे हैं, फिर भी आपको डाइवर्सिटी जस्टिफाई करवा रहे हैं. नेचुरल में पिक इट अप एज सॉइल, पिक इट अप एज क्लाइमेट एंड पिक इट अप एज रिलीफ. And facilitator में you take up anthropogenic, माने human induced. That is infrastructure
natural inputs that enhances natural positive aspect और, तो enhances को बबल में डाल देते हैं, ओवर रूल्स, इसको भी बबल में डालते हैं, नेचुरल एडवर्सिटीज। अच्छा, अब जब हम बोलेंगे तो आपको बहुत आराम से समझ में आएगा। आप दोनों पेजेस को, द प्रीवियस वन इज मच मोर ब्रॉडर, तो हम उस पेज को ओपन कर देते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनो हम क्या कह रहे हैं। एग्रीकल्चर इज व्हाट इज आवर बिगिनिंग ऑफ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी। और एग्रीकल्चर में हम क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं? What exactly we have to study here is number one, immensely diverse. Diversity is to be seen. It is immensely diverse, and diversity is to be seen in consideration of number one, the constituents of agriculture, and number two, the demarcated facilitators of agriculture. None of them can be identified to be static in nature. Agree? आपको वर्ल्ड एग्रीकल्चर पढ़ना है। एग्रीकल्चर इज क्रॉप, लाइवस्टॉक, aquaculture and silvipasture culture, and agriculture is facilitated by diversity of climate, diversity of relief, diversity of soil type, that is further complicated by Punjab is example of the region on map of world that is not having that favorable agroclimatic condition. It's a semi-arid climatic zone. It is not that favorable when it comes on to agricultural conditions. However, has evolved out to be granary of our country. It is contributing maximum to the country's food basket. So is Punjab a very good example where infrastructural input has overruled natural restraints? Yes, no, class. Similarly, NCERT information, West Bengal in our country is cultivating 3 crops of rice per year. Aman, As, Boro, if you have read NCERT. When I talk about these 3 crops of rice per year, in spite of the fact that rice is a soil exhaustive crop, it is difficult for me to cultivate it regularly. And I'm successfully cultivating 3 crops of rice per year. Number one, of course, because I've got favorable natural conditions. I'm enhancing the natural conditions by adding the dose of chemical fertilizer that restricts the requirement of leaving my land fallow. बात समझ में आ गई? Yes, no, class. Please don't feel lethargic in giving me go ahead. नहीं समझ में आता है तो नो लिखना है, और समझ में आ जाता है तो हैंड रेस कर देना है. Why we have created such big introduction? Agricultural regions and types of world. हमारा बोल्ड हेडिंग एग्रीकल्चरल टाइप्स रहेगा, रीजन को हम इन बिटवीन फिट इन करेंगे. Agricultural types of world is a generalized demarcation of types because agriculture, number one, is wide spectrum of constituent. Agriculture, number two, have got wide range of facilitators, wherein number three, human induced facilitators are highly diverse and dynamic. Getting it or not? मेरे ख्याल से अब लिखने में आसानी रहेगी. बोल्ड हेडिंग बना लीजिए, एग्रीकल्चरल टाइप्स ऑफ वर्ल्ड, और यू राइट टाइपोलॉजी एज इज रिटन इन योर सिलेबस. एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजीज ऑफ वर्ल्ड हम भी बना लेते हैं, ऑफ कोर्स ऑफ वर्ल्ड.
Point number 1. Reproductive industry agriculture is defined to be crop cultivation, animal rearing. I'm repeating, reproductive industry agriculture is crop cultivation, animal rearing, aquaculture, and silvipasture culture. As its constituents. As its constituents. Next point. These diverse constituents incorporate a wide spectrum of facilitators same point, both natural and anthropogenic. Next point. Agriculture, therefore, projects to be both diverse, underline, and dynamic, underline, activity. Next, in economic geography, study of agricultural types is derived from German scholar Dermont Whittlesey classification ब्रैकेट में लिख लीजिए proposed in 1936. Same point change over. He identified thirteen agricultural types. List them the way I am doing because we have to group them. Nomadic herding, livestock ranching, shifting agriculture, sedentary agriculture, intensive subsistence with paddy culture, intensive subsistence without paddy culture.
mixed subsistence, mixed subsistence. Out of 13, 7 names you have written. Club all of them together and write tropical developing types. I repeat, tropical developing types. Continue with your list. Our list continues and I write it here. Number 7. Number 8. 7th mixed subsistence. Number 8. Extensive commercial mixed farming. Extensive commercial mixed farming. Number 9. Extensive commercial grain farming. Number 10. Commercial dairy farming. Club these 3 together again and write down temperate developed agriculture. Temperate. I am writing the spelling here. Temperate developed agriculture. I'm left out with 3 more names. 13 type is what UPSC has given us. So I continue with my list. I write number 11. It's Mediterranean agriculture. Number 12. It's horticulture. In bracket, truck farming. Bus and truck farming. And number 13, final. Plantation agriculture. Plantation agriculture. Club these 3 together and in front of it write down specialized agriculture. Specialized agriculture. Pause down. Dermont Whittlesey was a German scholar, geographer. He way back in 1936 proposed agricultural types, typologies of world. He advocated that there are 13 types. It is very wrong for me to believe that after 1936, there was no other scholar to have proposed agricultural classification or types. But just like we have learned Balk and Webb in our cultural region, some of the classification precisely very well help us in solving our requirement as geographers. So we follow it. By default, 36, 20, 22, nature of agriculture in terms of its facilitators and constituent have got modified. So we add them by default, but the principal categories as outlined by Whittlesey, we maintain it as it is. Is that comfortable? Now, when I talk about Whittlesey's classification, he has given us 13 types. अब 1, 2, 3, 4, 13 तो आंसर में लिखना out of question. In a 20 marker question where you are supposed to write, that is the maximum marks of a question that we attain in our examination, I am supposed to write 250 words. 250 words में ये 13 type 1, 2, 3 करके अलग अलग लिखना impossible. That is the reason what we have done. We will not miss out on any type while writing answer on Whittlesey's agricultural typology. But in place of writing it as 1, 2, 3, 4, 13, what we do? 1, 2, 3. Come on, tropical developing agriculture
temperate developed agriculture and specialized agriculture. Come on, give me a confident hand raise. ये तो मैनेजेबल हो जाएगा ना. अच्छा, मान लीजिए एग्जामिनर ने मुझे, एंड क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, examiner have asked me a question which is specific, that write the characteristics of intensive subsistence with without paddy and the challenges associated with it. Then also I should not run short of content. I am in the position of enlarging it to a full-fledged 20 marker answer, and all classification is asked. Then also I am in the position of writing it, because that is the writing skills that we need to develop for sure. So we are organizing the information. So how many types are there? It is 13. How many categories we can divide them into? It is 3. अच्छा, climatology के details में जाना नहीं, but because it is temperate tropical written, तो एक बहुत basic सा point बता दे रहे हैं. This is my geoid. Let me go back to black color. This is my geoid. Shape of a planet. This is my equator, 0 degrees, and then I take, आपको जब map of world बता रहे थे, then we talked about latitudes and longitudes very briefly. एकदम basic point पर बता रहे हैं, इसको अपने दिमाग में रखो. 90 degrees north, 30, 60, 90 degrees south. ठीक है? This is 30 degrees north to 30 degrees south, including equatorial belt also. Lower latitude, warmest. We call it. आपके फर्स्ट 7 नाम के साथ आपने क्या लिखा है? ट्रॉपिकल डेवलपिंग. ठीक है. अच्छा, उसके बाद के 3 नाम के साथ क्या लिखा? कलर चेंज करके अप्लाई कर लेते हैं ताकि लेबलिंग बहुत क्लियरली जस्टिफाइड रहे. सो आई एम पुटिंग ऑन रेड डॉट्स नाउ. इसमें एक क्वेश्चन लेना है, अभी आपको बता रहे हैं. बियॉन्ड 60th पैरेलल कल्टीवेशन, हमने उसको क्रॉस कर दिया. क्रॉस करके प्रूव कर सकते हैं बट इट इज नॉट इन आवर कंसर्न एज फार्मर्स. Agriculture crop cultivation is not justified. Agriculture crop cultivation is not identified with 60th parallel and beyond. इसका मतलब frigid zone में you don't take into consideration crop cultivation. Is that clear? So I'm left out with tropical and temperate. I have not labeled temperate as yet. Reason is, careful. Red dot can be applied as temperate, पर इसमें एक point का clarification हमें लेकर चलना पड़ेगा. And what is that? Important. This is subtropical, and thus this is temperate. इसका मतलब whenever I am mentioning temperate developed agriculture, I repeat, whenever I am referring temperate developed agriculture, what is the latitude I am concerned with? 45 degrees to 60 degrees, because I include subtropical within tropical. Is that comfortable with us? So tropical क्या हो गया? Warm. Temperate क्या हो गया? Comparatively colder. अच्छा, एक और बात पूछते हैं, true false बताना. Do I sound correct कि tropical regions में, tropical हाँ साउथ में भी बिल्कुल, नदन सदर्न हेमिस्फेयर दोनों में अप्लाइड होगा. सदर्न हेमिस्फेयर को हम नॉर्मली ज्यादा फोकस नहीं करते. सदर्न हेमिस्फेयर इज वाटर हेमिस्फेयर. 82% of southern hemisphere is water, and thus population concentration in south is less. Agriculture भी definitely फिर less होगा. So sample examples you can take. Our study largely remains confined to northern hemisphere. Otherwise, southern hemisphere is always the mirror image of northern hemisphere. Okay, I was just making one statement without true false.
Agricultural type by Dermont Whittlesey. We geographers have categorized them into 3 blocks. I'm trying to be comfortable with each type individually, so that if examiner gives me individual type, I have got information to write in details. But if examiner gives me, and examiner has given me most numerous time, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में अगर कोई क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है वो है विटेल्सीज क्लासिफिकेशन. हम प्रूव करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग इट, विल बी ओपनिंग द क्वेश्चन पेपर एनालिसिस. So if the question is Whittlesey's classification, identify limitation and etc., all 13 is to be mentioned, but all 13 cannot be written with the in details. So grouping important हो जाती है. So we have thus grouped it as tropical, developing, temperate, developed and specialized. Tropical, temperate का locational clarification आ गया. What is to be considered as tropical? 0 degrees to 45 degrees. Yes or no? Subtropical भी include कर रहे हैं. And what is to be considered as temperate? 45 degrees to 60 degrees. Beyond 60th parallel, agriculture do not exist. कुछ minor exceptions हैं, otherwise do not exist. Am I given? Go ahead. Given. अब मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दे दो, हम कन्विंस हो जाएंगे आपको समझ में आ गया. क्वेश्चन क्या है? Am I correct in believing? सीधा ट्रू फॉल्स बताना. Am I correct in believing tropical location, lower latitude, warmer location, will have cultivable conditions prevailing throughout the year, whereas colder locations, temperate, will be having confinement of cultivable season only during summers? True, false? True. Winters in higher latitude become so grim that you fail to cultivate. Is that clear? Shabash. True is the point. And this is our base to understand the 13 types in 3 blocks, one by one. Are you giving me go ahead now? You are. एक और पॉइंट ऐड कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. इसको लिखकर आप बॉक्स में डाल लेना. ये डायग्राम को भी आप बनाना चाहो तो बना लेना. आई जस्ट वॉन्ट टू एड 1 पेज, फिर हम दोबारा इस डायग्राम पर चले जाते हैं. एक स्कॉलर हमारी नॉलेज में होना चाहिए. एंडरसन. एंडरसन आइडेंटिफाइज टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर टू बी ecological, near ecological, non-ecological. एक बॉक्स आइटम के तौर पर बना लीजिए अपने रजिस्टर्ड पेज. एक स्टेटमेंट को सुनो, समझो, फिर हम फटाफट से इंडिविजुअल टाइप्स को पिकअप करते हैं. आई एम मेकिंग अ जनरल स्टेटमेंट. एग्रीकल्चर कैन बी कॉल्ड इकोलॉजिकल टाइप if it is not pressurizing, if it is not extracting much from the nature. मतलब एग्रीकल्चर इज मोर सस्टेनिंग, सस्टेनेबल, आप उसको इकोलॉजिकल कहोगे. ठीक है. डू आई साउंड करेक्ट इफ आई से primitive the agriculture, more ecological it should be, more commercially developed agriculture, it should be non-ecological? Yes, no. Here, yes, no. बाकी सब क्या कर रहे हो? तो बाकी सबको क्लास से बाहर निकाल देते हैं. 4-5 नहीं आंसर देना है तो. Yes. When I take into account ecological and non-ecological, एक fundamental ये है, more I am incorporating economic input to agriculture, more I'll be extracting from soil. So it will become non-ecological, vice versa. But is this general rule absolutely valid? अब थोड़ा सा अपना टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर का लिस्ट ओपन करो, हम भी ओपन कर देते हैं. आई एम जस्ट कमिंग देयर श्रेयांश. My choice is shifting agriculture. Which category do will place shifting agriculture? Primitive or advanced? Primitive. Practiced by the native people, the first people,
the fourth world community, as we have learned in culture. These people are practicing very primitive agriculture called shifting / and burn agriculture. They cut down the standing vegetation, burn it. They cultivate the land, don't have capacity to maintain the soil fertility. 1 साल 2 साल cultivate करके, leaving that land fallow, getting onto the new forest area, cutting and burning it. Is it not primitive and still wasteful? Can I thus say that this primitive will be non-ecological? Yes or no? Confident, yes or no? Yes. So no need to take a watertight block, but a general assessment. More primitive, more ecological, more advanced, more non-ecological. As a general combination, that is correct. So while writing about Whittlesey, we very silently add Anderson. Why we don't follow Anderson's classification? It doesn't give me that scope of exploring the types which Whittlesey is giving us. So we just try to add Anderson to enrich our content. So our first block begins now. What is the name of first block? Tropical Developing Agriculture. Make that heading. बुलेट पॉइंट्स लिखवा रहे हैं, लिखते जाओ, लिखवाने के बाद समझाते हैं. डायग्राम बनाना चाहते हो, बनाओ बनाओ. ग्लोबल वार्मिंग का एक पॉजिटिव आउटकम कुछ स्कॉलर्स क्लेम करते हैं ना कि वार्मिंग हुआ तो 60th पैरेलल के बियॉन्ड आइस मेल्ट ज्यादा प्रोमिनेंट हो गई, एंड दैट इज द रीजन वी हैव इंक्रीज द एरिया दैट वी कैन पुट टू कल्टीवेशन. इसलिए ऑफिशियली टुंड्रा सॉइल को रिकॉग्निशन मिल गया. वी कॉल इट जेली जोन. अदरवाइज इट इज डेफिनेटली नॉट अ सॉइल इन टेक्निकल टर्म्स. पढ़ेंगे, सॉइल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, डोंट वरी. Done, all of us? Done. Category 1 begins for us. Block number 1, tropical developing agriculture. I just want to make the list in front of us. As I have created it, it will be easier for you. थोड़ी देर के लिए लिस्ट को देखो. Tropical, we know the latitude. Developing, economically progressive. We are not economically advanced. Agriculture. How many types we have included here? 7. 7 को भी 1 2 3 4 7 हैंडल करना तो मुश्किल है, तो क्या करें, ध्यान से देखेंगे. Can I say that some of the tropical developing agriculture is livestock only? मतलब कौन सा कंस्टिट्यूएंट है एग्रीकल्चर में? खाली एनिमल्स. And majority of them is belonging to crop only. Yes, no. Yes, no. बात समझ में आ रही है? ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, नहीं तो आंसर नहीं लिख पाएंगे. एग्जामिनर बिल्कुल आपके मार्क्स डिडक्ट करेगा इफ यू हैव मिस्ड आउट ऑन एनी टाइप. You cannot miss out on any, but you have to generate the capacity to consolidate. ठीक, तो बोल्ड हेडिंग दोबारा से बोल रहे हैं, बना लिया तो बहुत अच्छी बात है, रिपीट कर रहे हैं. ट्रॉपिकल डेवलपिंग एग्रीकल्चर, पॉइंट नंबर 1. This category of agricultural types, this category of agricultural types involves livestock only, underline, and crop only, underline. Categories of agriculture. Next, the livestock only.
The livestock only, underline, includes separate bullet points में लिखिए, nomadic herding, underline, create sub bullet points. Nomadic herding, create sub bullet points. It is information repeated. We are aware of many of them. Practiced by native or first people. You know, we are talking about primitive fourth world community. Practiced by native or first people. Next. Humans are completely dependent. Humans, next subpoint. Humans are completely dependent on livestock. And livestock are dependent on natural pastures. Same category, next bullet point. Animals are thus not reared or nurtured. Animals are thus not reared. Next, this type qualifies to be ecological agriculture, underline. Finally, it includes large range of animals as cattle. Bracket में लिखिए Masais, recalled the cattle herders, camel, ब्रैकेट में लिखिए बुदविन्स, हॉर्स, ब्रैकेट मंगोल्स, और 1 स्टार मार्क नेम रेनडियर. सांता क्लॉज का स्लेज याद आ रहा है सबको? जो एनिमल पुल करता है ना, वो रेनडियर है. सो रेनडियर, ब्रैकेट में लिखिए सोमाइड्स, सोमाइड्स. अच्छा, why I have put on a star mark to it? Reindeer herders do not belong to tropical latitude. वो कहां जाएंगे? जहां पर हमने क्रॉस मारा था, frigid. Yes or no? So why it is so important for me to add this? It is important for me to add because if I encounter, supposedly, I encounter a question about write down the characteristics of nomadic herding, या write down the characteristics of livestock only agriculture. तो livestock only agriculture में nomadic herding लिखोगे. nomadic herding लिखते हुए मसाइज, बुदविन्स और हॉर्स हर्डर्स, मंगोल्स लिख दिया. रेनडियर हर्डर्स भी तो हर्डर्स ही हैं. यस और नो?
So star mark matlab if you are writing it as tropical, are you getting it, students, here in virtual class? If you are writing answer as tropical developing reindeer, bilkul mat likho. But if you are writing answer on nomadic herding separately, to reindeer zarur likho, kyunki reindeer will add to the diversity of nomadic herding population. Is that comfortable? Here. Samoyeds are in Siberian Russia, higher latitude, इसलिए स्टार मार्क के साथ दिए. कैरेक्टरिस्टिक्स लिखवा दिए, बिल्कुल रिलैक्स करके रिमाइंड करो. Which type of agriculture we are handling right now? वो तो हो गया. Which type of agriculture we are handling now? Livestock only. What is livestock only agriculture? It is two type. We have just detailed out nomadic herding. अब हम उसको रिपीट कर रहे हैं, समझा रहे हैं. You will give me go ahead, then फिर हम फटाफट livestock ranching लिखेंगे. What is the difference between nomadic herding and livestock ranching is that in nomadic herding, you are not taking care of health, hygiene, feed, fodder of your animal. आप उनको rear नहीं कर रहे. You are not taking care of them. You are 100% dependent on your animals, and your animals are dependent on natural pasture. You are simply herding them, roaming them around in hunt for natural pasture. Which category of people practices it? Primitive. उसको prove करने के लिए हमने कुछ examples अपनी knowledge से और कुछ additional add कर लिए. As soon as I say that these people are dependent on animals and animals are dependent on natural pastures where there is no rearing involved. No rearing मतलब आप फिर nature से कितना extract कर रहे होगे. एक animal nature से कितना grass खा जाएगा. I hope you are understanding. If animals are only herding, they basically are not going to have that much of the exploitation. Do you agree? So nomadic herding can be safely classified into overgrazing. जो problem है ना, वो livestock ranching के साथ जाता है, nomadic herding के साथ नहीं जाता. Because in nomadic herding, you don't have that huge animal population with you. You are primitive. You have got very small size of animal population. So it is primitive most and thus can be ecological. Is that comfortable? What are the characteristics of nomadic herding? Livestock only, practiced by primitive people. It is ecological type. You are not rearing your animals. Wide spectrum of animals can be included, largely involving native people. As soon as you add animals name and native people, you have given examiner the location. Come on, Budwins were camel herders of Sahara Desert. Yaad aa raha hai? Masais were cattle herders of African savanna. Mongols are horse herders of Central Asia, neighboring Mongolia. So I'm easily giving examiner those unfavorable remote interiors on the map of world, and I'm done with it. To maintain the soil fertility. So जैसे soil fertility decline होती है, I simply leave it, go to the next area, cut down the standing vegetation, burn it and cultivate. Dual loss हो रहा है. एक तो जो standing vegetation के साथ एक ecological community है, आप उसको destruct कर रहे हो. और दूसरा 2 years, 3 years, whatsoever is the tenure you are being there, उसके बाद आप उस land को fallow छोड़ देते हो. Now it is not even having crop and the original vegetation you have removed. बहुत likely possibility है ना कि soil will get eroded. Yes or no? So it's a wasteful practice. So shifting agriculture is more primitive, but still is non-ecological. Sedentary agriculture is economically more developed and still is ecological. है दोनों के दोनों ही primitive. Are you understanding it or not? Shifting का क्या मतलब हुआ? Shifting the field. Sedentary का क्या मतलब हुआ? Rotating the crops. I hope you are understanding that. Both of them are practiced by primitive people. I oblige. थक गए? ठीक है, कल करेंगे इसके बारे में. बताओ पहले, लाइव स्टॉक रैंचिंग एंड नोमैडिक हर्डिंग तो पक्का हो गया ना? यहाँ पर भी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल इजी गोइंग टॉपिक है. और मेरे ख्याल से ये इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड एंड ट्रेड, ये तीनों ही जो प्रिंसिपल ब्लॉक हैं इकोनॉमिक ज्योग्राफी के, दे आर सच इजी गोइंग टॉपिक्स दैट वंस डन फॉर एवर.
नेम का बर्डन बढ़ेगा, यहां पर कम है। जैसे आप इंडस्ट्रीज में आओगे तो आपको सिटीज के नाम याद करने पड़ेंगे, बट दैट गिव्स यू रीजन बेसिकली टू गेट इनटू द पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड विद स्लाइट मोर इंट्रूजन। तो जब आप प्राइमेट सिटी पढ़ते हो या सेंट्रल प्लेस थ्योरी पढ़ते हो या रैंक साइज रूल पढ़ते हो, तब आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता विद द नेम्स ऑफ द सिटीज। तब आपका पूरा फोकस रहेगा ऑन विच आर दी theories, what are their implication. So they are easy going topics, don't worry at all. How was it today class? आजकल क्यों आप लोग का सबका कुछ वो चल रहा है क्या, सब माइंड ब्लोइंग? बेटर देन व्हाट? बेटर तो रिलेटिव टर्म हो गया ना, बेटर देन व्हाट? yesterday yesterday was something that was very trickier and I prepared you mentally. आप लोगों को हम क्या बताएं, आप लोग सबका पोर्टल का एक कॉमन पासवर्ड और एक कॉमन ईमेल आईडी दिया गया है. All of you have been shared with the portal link and you also portal link with the email ID of the center and the password. आपका अपना ईमेल आईडी नहीं डालना है उसमें. Bye bye class, see you tomorrow. Good night.